कुछ इस तरह सेटिंग करो मेरा नहीं मैं इंस्ट्रक्शन दे दूँ। Good morning all. Good morning all. Here are a few instructions for you cadets and students and those who have joined the webinar. स्टूडेंट्स और कैडेट्स के लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि आपको चैट बॉक्स में या कहीं भी अपनी जो है अटेंडेंस भेजनी नहीं है, उससे बहुत डिस्टर्बेंस होती है। ठीक है, अभी देखो ये स्टूडेंट है एक मुस्कान, क्लास बीए फाइनल ईयर 6th सेमेस्टर। तो इसने जैसे ही अपना अटेंडेंस भेजी है ना बेटा, तो उससे हमें इधर डिस्टर्बेंस होती है। तो आप काइंडली यहाँ ना करें, अपने टीचर इंचार्ज को भेज सकते हैं। ठीक है, और जब आप ज्वाइन कर जाओगे ना बेटा वेबिनार, तो यार अटेंडेंस इज ऑटोमेटिकली विद अस, सो प्लीज इसको भूलना नहीं है। ठीक है, ओके। और दूसरी चीज मुझे ये कहनी है कि आपको फीडबैक प्रोफॉर्मा फिल करने के लिए एक लिंक भेजा जाएगा चैट बॉक्स में, लेकिन वो थोड़ा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वेबिनार, वो स्टार्टिंग में नहीं, थोड़ा एंड में भेजा जाएगा। तो आप उसके लिए भी चैट बॉक्स में लिखेंगे नहीं बार बार, हमें पता है हमें कब और कहाँ और क्या क्या करना है, वो हम भेज देंगे। ठीक है, और उसको भरना, उसको फिल करना आपके लिए कंपल्सरी है। आफ्टर फिलिंग दैट फीडबैक परफॉर्मा यू विल गेट योर ई सर्टिफिकेट। सो वो सबको एक है। ये देखो बेटा रितु, आप फिर से वही मिस्टेक कर रहे हैं। डोंट सेंड योर अटेंडेंस बेटा, वैसे तो ऑटोमेटिकली अटेंडेंस हमारे पास है, अदरवाइज अगर आपको फिर भी भेजनी है तो अपने टीचर इंचार्ज को भेज सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में या कहीं और। ठीक है, काइंडली बेयर विद अस, कोऑपरेट विद अस एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस दैट आर बीइंग गिवन। ओके बेटा, ओके। और एक चीज और है, बाद में भी मैं अनाउंस करूंगी, सो दैट जो बाद में ज्वाइन करते हैं वो भी समझ लेंगे कि आपके पास अगर क्वेरी है, जब रिसोर्स पर्सन अपना एड्रेस अपना लेक्चर डिलीवर करेंगे, कोई क्वेश्चन आता है आपके माइंड में, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो राइट दैट क्वेश्चन और योर क्वेरी इन द चैट बॉक्स। और एड्रेस ओवर होने के बाद, उनका लेक्चर ओवर होने के बाद, हम कोशिश करेंगे विद इन फ्रेमवर्क ऑफ टाइम जितना हम क्वेश्चंस आपके ले सकें हम लेंगे, कोशिश करेंगे सारे लें, लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन टाइम। ओके, तो आप अपना वहाँ लिख सकते हैं। थैंक यू। और एनसीसी कैडेट्स और बाकी सारे स्टूडेंट्स भी ऑन करना अपना, आप अपना कैमरा ऑन रखना बेटा, और माइक तो आपका ऑफ ही रहेगा। ठीक है, माइक तो आपने ऑन करना ही नहीं है। ठीक है, यस, अपने अपने कैमरास ऑन करिए, वी वांट टू सी यू। और एनसीसी कैडेट्स जो यूनिफॉर्म में है, सेट योर यू नो फेस और समथिंग, यू नो आपका जो पोस्चर है वो हमें थोड़ा आपकी यूनिफॉर्म थोड़ा नजर आ जाए। फॉर आपको मेरी यूनिफॉर्म नजर आ रही है थोड़ी, तो ऐसे आप कोशिश करें, बिकॉज इट इज योर वेबिनार, इट इज योर इवेंट, तो थोड़ा आप इसको जो है अपनी प्रेजेंस शो करिए। ठीक है, कैमरास ऑन करो सभी। थैंक यू, कुछ नहीं तो कर दी।
आई कांट सी पीपल इन यूनिफॉर्म, वो भी है क्या? थोड़ा ऐसे सेट करो अपना कैमरा कि वो आपकी यूनिफॉर्म जितनी हो सके हमें नजर आए। तो बेटा ये जो टॉपिक है ये आपके इंटरेस्ट का है, आपको अच्छे से सुनना है, यू विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस। और ये YouTube पे भी जो है लाइव होगा, हम वो लिंक भी शेयर कर देंगे चैट बॉक्स में भी और सभी ग्रुप्स में भी जहाँ जहाँ हमने इन्फॉर्म किया हुआ है। ये देखो पूजा, फिर आपने अटेंडेंस सेंड करी है बेटा, नहीं ऐसा नहीं करेंगे आप, नो मैसेज इन द चैट बॉक्स, ठीक है बेटा? गुड मॉर्निंग सर। Good morning, ma'am. Good morning. वेलकम सर, वेलकम। Thank you, ma'am. Thank you. Thank you very much. Good to see you, sir. We are going to start it very soon. Yes, I'm ready, ma'am. More than 100 participants are already there, sir. Yes, I was going through more than 100. It's a huge number. रिहर्सल के टाइम पे आपकी देखी ना सर पीपीटी, हाँ जी। एट लाइक के अभी सारी देख लो। हाँ जी। फॉरवर्ड बस इशू यही रहता है कि लाइक जो फोन पे जुड़ते हैं ना उनको थोड़ा सा इशू, प्रेजेंटेशन अच्छी तरह विजिबल नहीं होती, उसमें एनिमेशंस एंड ऑल दैट। बट अगर कंप्यूटर डेस्कटॉप पे हैं तो फिर आप यू विल रियली एंजॉय दैट। राइट सर, राइट। ये थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस तो रहती हैं सर ऑनलाइन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ये तो है। कोई नहीं है, फिर भी बहुत अच्छे एफर्ट्स हैं। जी जी। This is our duty also, being we are in academics, that we have to motivate, and the population is in dire need nowadays about all these things. They should be aware about how to improve their health and all that. और इस कोविड पैंडेमिक ने made each and every individual aware that this is the only thing where you have to concentrate. Exactly. नहीं तो कोई ध्यान नहीं देता था सेहत के ऊपर, अब सब ध्यान देने लग पड़े हैं, सेहत का ख्याल रखना है। तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हाँ, this is the positive from this last 2 years we had learned. Right, sir. No doubt. Very fine. Sir, it was very, it was a hard duty to, वो आपका वो जब आपका हमने पढ़ा ना सर प्रोफाइल, and really sir, really being in university academics होने के कारण अपने आप ऑटोमेटिकली होता रहता है जी। 6-7 minutes to go. अभी कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है ना सर? नहीं, बहुत नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है। That's also important. नहीं तो उसके बिना तो फिर। हाँ जी। ये गूगल टीम जो है, टीम्स माइक्रोसॉफ्ट का, ये कम पॉपुलर हुआ है, ज़्यादा नहीं यूज़ करते। ज़्यादा जूम और गूगल मीट पे सबने डाउनलोड करके रखे हैं, तो ये कई लोग यूज़ कर रहे हैं एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स में। अच्छा है ये, इट इज़ फार बेटर देन अदर। राइट सर, हमारे यहाँ तो जो हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं ना सर, हाँ जी, भी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पर है, हम लोगों ने। अच्छा, जी ठीक है। हाँ, हमारे मैम, प्रिंसिपल मैम यही कहते हैं कि आप इस पर लेंगे, हाँ तो जी, आप भी रहेगा और अच्छा भी इसमें रहेगा। हाँ जी, हाँ, फेमिलियर हो जाते हैं। People are waiting.
जस्ट मैं 2-4 मिनट और वेट कर रही हूँ। कोई बात नहीं। राइट जी सर। Very good morning, sir. Good morning, ma'am. Good morning. How are you, sir? Good, madam. Nice to see you all. It's a pleasure, sir, to have you with us as a keynote speaker. Yes. As Geeta was telling, such an elaborate biodata. Wonderful, wonderfully. You have participated in so many conferences, been the head of so many seminars. सर बहुत काम करा हुआ है। मैं तो उसको देखते देखते कर रही थी, इसके मेंबर, उसके मेंबर, उसके मेंबर, so many books, and you have guided so many students. हाँ जी मैम, बस यही आ जाता है हमारे फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट में, मतलब बोलने वाले बहुत कम हैं और दिस सब्जेक्ट इज सो गुड और हर एक इंडिविजुअल के साथ जुड़ा हुआ है। एंड इफ वंस यू आर डूइंग समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इजीली यू गेट द अपॉर्चुनिटीज। और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत एक्सप्लोरेशन है इस फील्ड में। सर आपका बायोडाटा हम सबके लिए इंस्पिरेशन है। नहीं, मोस्ट थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। मैं तो आपके इंस्टीट्यूट में हैड विजिटेड, तो बहुत अच्छा लगता है कि दिस एक्चुअली में दिस इज द सच टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट शुड बी रोल मॉडल फॉर द अदर कॉलेजेस। जितने आप तो मतलब ऐसा हो गया, प्राइवेटाइजेशन के कारण दुकानदारियां बन गई हैं एजुकेशन सिस्टम, बट जो एक्चुअल में होना चाहिए ऐसा सेटअप और बच्चों को एनवायरनमेंट जो मिलना चाहिए, उसके लिए तो मतलब रियली your entire team and your management really appreciable for them. So this is the entire work of the organizers, both Geeta and lovely ma'am. हाँ जी, this is they had been growing up under your umbrella. आपने इतनी उनको liberty दी हुई है, इतना मतलब motivation है, और once you give them responsibility, teachers बहुत अच्छा काम करते हैं मैडम। दो तरीके के हैं, one is autocratic and one another type is, so मतलब जब आप उनको खुद फ्रीडम देते हैं, अपने आप बेस्ट उनमें से निकलता है। हाँ जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। So I think we'll be starting. Otherwise also, madam, D.A.V management is doing good overall if you consider the Indian scenario. Yes sir. No, और कोई मैनेजमेंट इतना एकेडमिक्स के ऊपर नहीं कंसंट्रेट करते, एंड द थिंग इज, अदर थिंग इज क्वालिटी एजुकेशन। आप कहीं की बात कर लीजिए, D.A.V मैनेजमेंट, चाहे D.A.V पंजाब में है, जालंधर, अमृतसर, चंडीगढ़, चाहे वो हरियाणा के हैं, सब मतलब आपको उन सिटीज में टॉप प्रायोरिटीज पे मतलब इनकी मिलेगी डिमांड। सर इंटरफेरेंस नहीं करती ना, दे गिव फ्री हैंड कि स्टाफ और प्रिंसिपल अपनी तरह से चलाएं। हाँ जी, परेशानी आती है देन वी रिवर्ट, अदरवाइज वी दे गिव अस फुल फ्रीडम कि आप अपने हिसाब से चलाएं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। Very nice talking to you, sir. We'll get back to you. हाँ जी, ओके ओके सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। सर एक अनाउंसमेंट मुझे करनी विद योर ड्यू परमिशन सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। Dear participants, you are not to send any message or anything else in the chat box, उससे disturbance होती है, ठीक है? So you are going to, you know, the lecture is going to be a feast for you all, तो उसको अच्छे से सुनना है आपने बेटा, और कुछ भी सेंड नहीं करना, डिस्टर्बेंस होती है। थैंक यू। बोलो।
Sir, if you permit me, can we start? हाँ जी मैम. Ask ma'am. Please start, Geeta. Go ahead. Thanks, ma'am. Dear all, on behalf of worthy principal ma'am, Dr. Chitrapal, and the entire family of D.A.V College for Girls, Yamunanagar, I, Major Geeta Sharma, extend a very warm welcome to our renowned resource persons, Dr. Nishan Singh Deol, Professor and Head, Department of Physical Education, Punjabi University, Patiala, and Dr. Fayaz Ahmed H. Ilkal, Assistant Professor and Coordinator, Department of Studies and Research in English, Rani Chennamma University, PG Center, Vijaypur, Karnataka. I feel pride in welcoming our today's guest of honor, Commanding Officer Colonel Ajay Kaushik and Adam Officer Colonel APS Sandhu of 14th Haryana Battalion NCC, Yamunanagar. I also extend a very hearty welcome to all my colleagues, NCC in charges, teachers, cadets, and students, and all other members of this national webinar. Thank you so much for being there. Now, a bit about the webinar, theme of the webinar, which is going to be very, very brief because we would like to listen more and more to our learned resource persons who have spared their valuable time for us. The theme of this webinar, as we all know, is Yoga, a holistic therapy during pandemic. इसका अर्थ है कि महामारी के समय में योग समस्त रोगों तथा सभी प्रकार के विकारों के लिए एक रामबाण औषधि या दवा है। कोरोना वायरस जैसी महामारी ने समस्त संसार के लगभग सभी देशों को बुरी तरह से प्रभावित किया है। सारा विश्व शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक रूप से अत्यधिक पीड़ित हुआ है। ऐसे समय में योग शारीरिक तथा मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण चिकित्सा प्रणाली या थेरेपी, होलिस्टिक थेरेपी सिद्ध हो सकता है। योग हमारे उत्तम स्वास्थ्य के तीनों तत्व बॉडी, माइंड एंड सोल यानी शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा, इन तीनों की रक्षा भी करता है और इन्हें सशक्त भी बनाता है। महामारी के दौरान पैदा हुए मानसिक तनाव और शारीरिक यातना से मुक्ति पाने का एक सरल रास्ता है नियमित योगासन व प्राणायाम। इसलिए योग को अपनाना और दूसरों को योग को अपनाने के लिए प्रेरित करना इस समय हमारी आवश्यकता ही नहीं है, बल्कि मानवता के प्रति हमारी एक सेवा भी है। इसी विचार से प्रेरित होकर आज हम योग पर नेशनल वेबिनार का आयोजन कर रहे हैं, जो कि 14 हरियाणा बटालियन एनसीसी के तत्वाधान में किया जा रहा है। And as we know, we will be celebrating our 7th International Yoga Day on the coming 21st June. So हमारा जो आज का प्रयास है वो भी योग की इसी श्रृंखला की एक कड़ी है। मुझे विश्वास है
कि हमारे आज के रिसोर्स पर्सन्स डॉक्टर निशान सिंह देओल तथा डॉक्टर फयाज अहमद जी के विचारों से हम सब योग के प्रति जागरूक होंगे, प्रेरित होंगे और अपना ज्ञानवर्धन करेंगे। एक बार फिर से आप सबका स्वागत और अभिनंदन। Now I invite worthy Principal Ma'am, Dr. Aba Ketarpal, to formally welcome our guest of today. Ma'am, Principal, please. Good morning, all. Good morning. Stay home, stay safe is the mantra these days. I welcome all to the one-day national webinar on the theme Yoga, a holistic therapy during pandemic. This one-day webinar is being organized by the NCC wing, 14th Haryana Battalion, NCC Yamunanagar. I extend a warm welcome to our guests of honor, Colonel Ajaypal Koshish and Colonel APS Sandhu, our Reverend Eminent Keynote Speaker of the day, Dr. Nishan Singh Deol, Professor and Head Department of Physical Education, Punjabi University, Patiala, our resource person of the day who will be joining us shortly, Dr. Fayaz Ahmed. He's Assistant Professor and Coordinator, Department of Studies and Research in English, Rani Chennamma University, PG Center, Vijaypur, Karnataka. I also extend a very warm and cordial welcome to the NCC in charges and cadets of different colleges who are here with us virtually connected on Teams and also on our YouTube live channel of the college. I welcome our faculty and students who have joined us. As rightly said by Geeta, we must have a healthy lifestyle. We must stay connected. We must share and care for our loved ones and practice yoga at home if we want to be physically and mentally healthy during this COVID-19 pandemic, which has become a major cause of stress and anxiety worldwide. Not taking much of your time, I hand over the mic and the laptop for further deliberations to the organizers, Major Geeta and Mrs. Lovely. Over to Geeta. Thank you so much, ma'am. Now I'm going to give a brief introduction to our resource person and who will be delivering the keynote address, Dr. Nishan Singh Deol. Dr. Nishan Singh Deol, Professor and Head, Department of Physical Education, Punjabi University, Patiala, is an inspirational personality amongst us today. I know that no introduction would suffice to provide a comprehensive view of Professor Deol's towering personality and his contribution to the field of education. Still, I would try to enumerate a few facts about him. Professor Deol started teaching at Patala, Punjab in 1994. In his long career of teaching profession, he has held various prominent positions, has published more than 103 scholarly research papers in different research journals of national and international repute, has chaired and acted as a resource person in various seminars, conferences and workshops organized within India and abroad. He has also presented erudite research papers in national and international level seminars and conferences. He has guided more than 69 PhD and MPhil scholars, and he has been a member of a number of prestigious professional bodies and has also secured for himself the title of being a national level basketball player. Apart from this, Professor Deol has 19 books to his credit and has also had rare exposure to various celebrated universities of the world. All this speaks volumes of Professor Deol's untiring and inspiring personality. And one thing more that I would like to mention here, it is
Professor Deol is extremely humble and down to earth person. One feels at home while talking to him, and I myself have experienced that. Indeed, feeling blessed to have you with us today, sir. Your presence is really a reward for us. Now, I invite you to deliver the keynote address of today's national webinar. Sir, the stage is completely yours now. We are looking forward to listen to you, sir. So I will not take much time. Thank you. Thank you, Major Geeta. Thank you very much. Let me share my screen. Is it visible? Yes, sir. Okay, ji. So thank you, Major Geeta, and I must congratulate the family of D.A.V College for Girls, Yamunanagar, for hosting this wonderful webinar on this very needy theme, and about which we all, the not only Indian population, rather I can say the whole of world is facing this crisis. D.A.V College is always taking lead in organizing the activities which develop the personalities of their students, and such type of webinars are very important, and the entire D.A.V team under the patronage of Dr. Abha Khetrapal is always leading from the front, and is a leading institute of not only of Haryana, rather I will say this is a leading institute in the entire Indian country. And when you talk about the quality education, such type of institutes, still they are giving quality education. And even I was going through the website of this college. It's been accredited by NAC with B++ grade. And I'm sure with such a tiring, such a hard-working faculty and the team, their grades are going to improve a lot in the next cycle. So I really appreciate Dr. Abha Khetrapal for giving the opportunity to me and to the NCC wing of 14th Battalion of this very prestigious institute. I'm thankful to Major Geeta for giving me the opportunity. This is a wonderful platform where we can discuss about what we, how stressful nowadays the whole of the population is, specifically the youth, because we have to motivate the youth. They are the huge sufferer, and for them, such type of webinars, totally like yoga as a holistic therapy during this pandemic. This terminology is a very huge terminology, and this is going to play a very important role for coming out from this pandemic. Guest of honor for this webinar, Colonel Achipal Kaushik, Colonel APS Sandhu. I personally welcome them, and my others resource person, Dr. Fayaz, he will be speaking in this area. So now for this webinar, I had kept the title as a science of soul. This is what yogi is. This is not a very simple terminology. This is entirely, we can say, yoga is a science of soul. What actually yoga is? We believe union in love between the individual conscious and supreme conscious, individual conscious and the supreme conscious.
between soul and God. Supreme individual conscious क्या चीज है? This is about the human being. हमारे शरीर की बात कर रहे हैं. And what is supreme conscious? It is हम जिसकी बात करते हैं परमात्मा. So generally we say योग. What योग is? It is a आत्मा और परमात्मा का मिलन है. So yog is a yogi. Who is yogi? So this is a terminology means yog, जिसमें हम कहते हैं कि about individual conscious and supreme conscious, आत्मा और परमात्मा. Then who is basically what we say? Who is a yogi? Yogi is a person whose life and activities are oriented towards re-establishing his relationship with God. जब हम इस दुनिया में आ गए तो हमारे को अब हमें अपना नाता जो है उस परमात्मा से जोड़ना है और उसका by what sources, उसका माध्यम क्या होना चाहिए? That should be योग, और इसके द्वारा हम उसको कर सकते हैं. So now the question is, we say योग teaches you how to listen to your body. हमें बताता है, योग टीचेस, हमें ज्ञान देता है कि हम अपने शरीर से बात कर सकते हैं. हम सब इतना बिजी हैं, वी हार्डली गेट्स टाइम कि हम अपने आप से बात करें. हम हमेशा बिजी रहते हैं, हमारे पास समय नहीं है, लेकिन हम अपने स्वयं से बात करने के लिए वी नीड सम सोर्सेस. और उस योग से अच्छा, योग से बढ़िया, योग से सुंदर कोई और तरीका नहीं हो सकता. दिस इज नॉट मियरली अ फिजिकल एक्सरसाइज जिससे कि हम कह सकते हैं कि हमारा शरीर बहुत सुंदर हो जाएगा. नो, दिस इज अ रीयूनियन. हमारा आत्मा और परमात्मा का मिलन. इसमें हम माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, इन सारी चीजों को भी हम सुधार सकते हैं. इन सारी चीजों को भी हम अपने आप इंप्रूव कर सकते हैं. सो वी से योग इज द जर्नी ऑफ द सेल्फ. योग क्या है? हमारा सफर है जिसको हमने तय करना है. हमारे जो पूरा जीवन है उसके द्वारा हमने तय करना है. और कैसे तय करना है? थ्रू द सेल्फ टू द सेल्फ. अपने अंदर तक हमने पहुंचना है और इसके द्वारा हम कह सकते हैं. सो योग इज बेसिकली इज अ लाइफ. Yoga is, this is not a physical therapy, it is a therapy and other worldly affairs, but it is a way of life. Means हमारे को सिर्फ इसको एक एक्सरसाइज के रूप में ही नहीं लेना चाहिए, but it has to be part and parcel of individual's life. हमारे जीवन का एक अंग बन जाना चाहिए योग. उसके अंदर हमारे को सारी इसकी जो फॉलोइंग्स है, सारे इसके प्रिंसिपल्स हैं, उन सबको हमें अडॉप्ट करना चाहिए. और हम उनको अडॉप्ट कर लेंगे, हमारा जीवन will be very healthy and very beautiful. So in this slide, this is what yoga is, what we perceive, what the media or what we had been perceiving कि हम ये मानते हैं कि आसन करना ही योग है. But this is not true. This is not the true depiction. बिल्कुल गलत है. ये आसन्स उसमें एक बहुत छोटा सा उसका अंग है और बहुत सारी इसके अंग जो हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आसन इज वन ऑफ द मीडियम, एक उसका हिस्सा है. बाकी के जो इसके अंग है, दीज आर दी 8 लिम्स, 8 इसके योग के हिस्से हैं. यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि. सो इन ये 8 चीजें मिलकर इन सब का मतलब क्या चीज है? हमें बाकी चीजों के भी, जैसे उसके मैंने आपकी प्रेजेंटेशन की उसके नीचे मीनिंग लिखा हुआ. ध्यान मीन्स मेडिटेशन हमने करनी है. समाधि मीन्स हमें जुड़ना चाहिए. धारणा कंसंट्रेशन. प्रत्याहार विड्रॉल ऑफ सेंसेस, हमें श्वास के ऊपर कर मीन्स. ये सारी चीजें मिलकर एक योग टर्मिनोलॉजी बनाती हैं और बहुत ही बड़ी टर्मिनोलॉजी है जिसको हमने करना है. अब क्वेश्चन आता है कि हमें व्हाट सेल्फ केयर इज. योग इज डूइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर सेल्फ केयर. अब हमें अपने शरीर का ध्यान रखना है. तो हम वन एंगल इज दैट वी हैव बीन डूइंग एक्सरसाइज, उसमें योग के आसन करते हैं. बट अपार्ट फ्रॉम दैट
these four are the major components of self care. उसमें हमें फिजिकली अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, हमें इमोशनली भी हमारे शरीर का ध्यान रखना चाहिए, सोशली दोस्तों से मिलना जुलना, बातें करना, परिवार से बातें करना, समाज से जुड़ना, समाज की सेवा करना, ये सारा भी जरूरी है। इमोशनली कैसे, क्यों हमारे को जरूरी है, योग कैसे जोड़ता है कि हमारे को स्ट्रेस मैनेजमेंट, मैच्योरिटी मींस इमोशंस के ऊपर काबू पाना भी हमारे को योग की मदद से मिलती है, योग की सहायता से मिलता है। अब उसके बाद आ जाती है बात स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल में हम कहते हैं कि हमें योग की प्रैक्टिस करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, पहाड़ों में जाकर हमें समय व्यतीत करना चाहिए, पशु पक्षियों से हमें बातें करनी चाहिए, घूमना चाहिए, फिरना चाहिए। सो ये भी स्पिरिचुअल जो केयर है, इससे हमारी लाइफ का जो स्ट्रेस है वो दूर होता है, इसको हम दूर कर सकते हैं। सो आजकल ये वर्ड इज क्वाइट फेमस, each and every individual, Tom and Dick and Harry talks about this word, what immunity। हर एक बंदा कहते हैं कि अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ। अगर आप टीवी के ऊपर एड्स देखेंगे तो सारा मीडिया, सारे जितने भी जो हैं सेक्टर्स हैं, वो इसी चीज पे ऊपर आजकल प्रमोट कर रहे हैं कि आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए जी, इम्यूनिटी बढ़ाएंगे आप अपना बचाव कर सकते हैं। लेकिन व्हाट इम्यूनिटी इज, it means exemption, means हम अपने शरीर का बचाव कर सकते हैं from where, from foreign agents। बहुत सारे वायरसेस, बैक्टीरियाज, फंगस हमारे शरीर के अंदर घुसते हैं और हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो हमारी सुरक्षा करता है, हमारा बचाव करता है इन चीजों से। सो इन दिस बहुत सारी चीजें हमारे बॉडी के सिस्टम्स जैसे टिश्यूज, सेल्स और उनके जो बाई प्रोडक्ट्स हैं वो हमारी शरीर के अंदर हमारी सुरक्षा करते हैं। और जितने भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे ऑल वायरसेस, बैक्टीरिया, उन सब से हमारा सुरक्षा करते हैं, उन सब से हमारा बचाव कर सकते हैं। अब आप इस एनिमेशन में देखेंगे, इस एनिमेशन में देखेंगे कि हाउ इनसाइड आवर बॉडी हाउ वंडरफुली इम्यून सिस्टम हमारा बचाव करता है। दिस इज वन ऑफ द बैक्टीरिया एंटर्ड इन आवर बॉडी। कहीं से भी जा सकता है, आपके खाने के साथ जा सकता है, चमड़ी में से जा सकता है, लेकिन शरीर के अंदर हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है, हमारा इम्यून सिस्टम है, वो हमेशा तैनात रहता है। एवरी 24 आवर्स इनटू 7 डेज हमेशा काम करता रहता है, सुरक्षा करता है। और जैसे ही वो घुसता है उसके ऊपर हमारे ये इम्यून सेल्स जो है हमारे शरीर के अंदर, वो उसके ऊपर अटैक करते हैं और उसको मार देते हैं। कहां पर होते हैं ये हमारे इम्यून सेल्स? इनसाइड द वेरियस लेयर्स ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी इंटरनल लेयर्स के अंदर ये हमारे WBC, हमारे इम्यून सेल्स जो सुरक्षा कर रहे हैं। अब आप देख रहे हैं वो ऑर्गेनिज्म ने जितने भी वायरस, बैक्टीरिया से उनको अपने अंदर खींच लिया, उनके ऊपर अटैक कर दिया, उनको खत्म कर दिया। सो जितने भी, वेदर इट इज अ डाइजेस्टिव हमारा सिस्टम है, उसकी लेयर्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जितने भी इंटरनल म्यूकेसा मींस अंदरली लेयर है हमारी, गट जिसको बोलते हैं, उनके वहां पर ये सारे इम्यून सेल्स हमेशा घूमते रहते हैं और वो हमारा बचाव करते हैं, हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। तो दिस इज द ड्यूटी ऑफ इम्यून सिस्टम। अब इम्यून सिस्टम में ये बैक्टीरिया आप देख रहे हैं, ये बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर जाता है। सो इम्यून सिस्टम के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। उसके अंदर बैक्टीरिया जैसे ही अंदर घुसता है तो इम्यून सिस्टम के अंदर हमारे WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, जो हमारा प्रोटेक्शन करते हैं, ये व्हाइट ब्लड सेल्स, जैसे ये आपकी शरीर के अंदर आपने एनिमेशन के ऊपर देख रहे हैं, व्हाइट ब्लड सेल एक पदार्थ छोड़ रहा है, सम ऑफ द हार्मोन्स आर बीइंग सीक्रेटेड एंड दैट हैज किल्ड दैट वायरस, और वो वहां पर उसको वायरस छोड़कर सीक्रेट कर मारकर नेक्स्ट जगह पर चला गया, मीन सर्वेलेंस के लिए चला गया।
जहां अब यहां पर उसको एक बैक्टीरिया मिला, उसने वहां पर उसको मालूम चल गया यहाँ पर बैक्टीरिया, वहां पर जाके उसने अगेन ही रिलीज्ड सम हार्मोनल सम सीक्रेशंस और वो बैक्टीरिया भी मार दिया. सो सच टाइप ऑफ सेल्स, WBC सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, फेगोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, बोन मैरो, लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स हमारे शरीर के इन सब हिस्सों में पाए जाते हैं और वहां से पूरे शरीर के अंदर हमेशा घूमते रहते हैं. और जहां से माय डियर फ्रेंड्स हमारे शरीर के अंदर लॉट ऑफ बैक्टीरियाज, फंगस एंड सम पैथोजेंस बहुत सारे एंटर करते हैं इन एवरी डे, हजारों की गिनती में, तादाद में. लेकिन these WBC, these immune system always keep on killing them, keep on destroying them, उनको मारता रहता है so that हमारा शरीर नॉर्मली फंक्शन करता रहता है, उसको कोई उसकी घबराने की जरूरत नहीं पड़ती. So this much efficient, these all are red blood cell और उनके अंदर white blood cell पड़ा हुआ है और वो हमेशा इन सब की सुरक्षा करता रहता है. Safety and security is the duty of WBC cells, white blood cells. So inside our body, जैसे कर्नल साहब, I don't know whether they had joined, they might be knowing कि जब भी हमारा you talk about the defense mechanism that works in various layers, first layer, second layer, third layer. और कोई भी अगर हमारा दुश्मन वहां से घुसना चाहेगा तो उसको पहली लेयर डिफेंस करेगी, फिर दूसरी लेयर डिफेंस करेगी, फिर तीसरी करेगी. सो दे वर्क इन दीस लेयर्स. इन द सेम वे आवर इम्यून सिस्टम इज आल्सो वर्किंग इन दैट पैटर्न ओनली. और पहले हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म इम्यून सिस्टम की आएगी, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस आएगी और फिर स्पेसिफिक इम्यूनिटी के कोई स्पेसिफिक सेल्स जो फिर भी इन लेयर से घुस के उसके ऊपर स्पेसिफिक सेल्स अटैक करेंगे और उनको मार देंगे. सो इतनी स्ट्रॉन्ग हमारी इम्यूनिटी सिस्टम है और उन सब से हम हमारा शरीर हमेशा लड़ता रहता है, 24 घंटे लड़ता रहता है, हजारों की मात्रा में, इन थाउजेंड्स माय डियर फ्रेंड्स, हजारों की तादाद में वायरसेस, ये सारे कार्सिनोजन, पोल्यूशन, जर्म्स, पैरासाइट्स, बैक्टीरिया, फंगस एंड टॉक्सिन्स हमारे शरीर के अंदर घुसते हैं एंड एवरी डे दे आर बीइंग किल्ड बाय द इम्यून सेल्स, बाय आवर WB व्हाइट ब्लड सेल्स के द्वारा इन सबको मार दिया जाता है. सो वी कैन से लाइफ इज फाइट अगेंस्ट फॉरेन सिस्टम. हमारा शरीर इसी पॉलिसी के ऊपर हमेशा करता रहता है, हमेशा लड़ता रहता है. इन होल लाइफ वी विल एनकाउंटर अ मिलियंस, लाखों करोड़ों की मात्रा में हमारे शरीर के अंदर एंटीजेंस विल बी एंटरिंग. वो बीमारियां पैदा करेंगे, लेकिन हमारा जो WBC है वो उतनी ही मात्रा में हमारे अंदर WBC सेल प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसके कारण हम वी आर लिविंग अ नॉर्मल एंड हेल्दी लाइफस्टाइल. अगर हम बात कर रहे हैं तो इतना दिस इज नॉट सो इजी, बहुत आसान नहीं है, बहुत सारा उसके लिए हमारे शरीर की, हमारी डाइट, ये सारी चीजें भी मैटर करती हैं जिनकी बात हम करेंगे कि क्या करना चाहिए. सो माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी चीजें व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर हमारी इम्यूनिटी के अंदर आती हैं. दीज आर दी कंपोनेंट्स, these are the constituents of our immune system. इम्यून सिस्टम के अंदर WBC व्हाइट ब्लड सेल्स, उनका क्या ड्यूटी है? दे अटैक इन्फेक्शंस इनसाइड आवर बॉडी. हमारे शरीर के अंदर कोई भी इन्फेक्शन होता है उसको अटैक करते हैं. फेगोसाइट्स जो सेल है वो क्या करते हैं? हम एनगल्फ करते हैं एंड डिस्ट्रॉय द पैथोजेंस. कोई पैथोजन अंदर शरीर के उसको दबाकर मार देते हैं, एनगल्फ, उसका गला घोट देते हैं. सो नाउअडेज हम अपनी ड्यूरिंग दिस कोविड पैंडेमिक T सेल और B सेल की बात करते हैं. सो ये हमारा जो वायरसेस जो हमारे शरीर के अंदर एंटर होते हैं उनको किल करता है. T सेल डिस्ट्रॉयड इन्फेक्टेड सेल्स, जो खराब हो गए उनको मारता है. B सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज इन आवर बॉडी, एंटीबॉडी जिनकी हमारे को कोविड-19 से लड़ने के लिए जरूरी है.
Basophil is another one, makes chemical that cause inflammation in bloodstream, और उसको हमारे शरीर के अंदर खून को बहने के लिए उसको प्रेरित करता है, मीन्स प्रॉपरली फ्लो ऑफ ब्लड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भी ड्यूटी बेसोफिल्स की है। उसके बाद मस्ट सेल, न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेज, लिम्फोसाइट एंड एसिनोफिल्स, इन सबका पर्टिकुलर ड्यूटी है कि पर्टिकुलर सेल्स के ऊपर, अगर वो फैगोसाइट्स हैं तो उनके ऊपर अटैक करेंगे, अगर वो बैक्टीरिया है तो मैक्रोफेज करेगा, अगर लिम्फोसाइट्स की ड्यूटी है वो अलग से अपनी ड्यूटी करेंगे, और वो सारा। तो इस तरीके से सारे अपने अपने काम के ऊपर ये सारे सेल्स दे कीप ऑन वर्किंग और हमारे शरीर को नॉर्मल फंक्शनिंग करने के लिए प्रेरित रखते हैं, कैपेबल रखते हैं। इफ दीज सेल्स विल नॉट फंक्शन, हमारा शरीर बीमार हो जाएगा और हम काम नहीं कर पाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज अ वंडरफुल डिपिक्शन ऑफ टुडेज सोसाइटी। हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, ये महान हस्ती, इनके पास इतने रिसोर्सेस होने के बावजूद भी इनका जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव नहीं कर पा रहे। इन द सेम वे वी आल्सो हैव, लाइक वी नीड टू गो फॉर योग प्रैक्टिस, हमें योग करना चाहिए, डेली करना चाहिए। एक्सरसाइज जो है हमें रेगुलर करनी चाहिए, तो हम हेल्दी एंड फिट रहेंगे। अदरवाइज हमारा ऐसे अब जो सिनेरियो डेवलप हो चुका है, अब क्या कहा जा रहा है कि आपको कोविड-19 के साथ हमेशा रहना है, और अगर उससे बचना है तो यू नीड टू गो फॉर एक्सरसाइज। आपको एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज वेदर इट इज अ योग, वेदर इट इज एनी सॉर्ट ऑफ फिजिकल वर्कआउट। आप घर में भी एक्टिव रहेंगे तो आप अपने आप को रख सकते हैं। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि एक्सरसाइज का कितना बेनिफिट है। आप इस एनिमेशन में देखेंगे कि एक्सरसाइज इंक्रीजेस VO2 max, मींस हमारे कार्डियोवास्कुलर, हमारे दिल की धड़कन, दिल की काम करने की क्षमता को बढ़ाती है। एक्सरसाइज इंप्रूव्स द स्ट्रेंथ ऑफ मसल्स, हमारा ब्लड प्रेशर को एक्सरसाइज नॉर्मल रखती है, वेदर इट इज अ सिस्टोलिक, वेदर इट इज अ डायस्टोलिक। हमारा बॉडी का कोलेस्ट्रॉल लेवल को हमारा एक्सरसाइज जो है वो स्ट्रेंथ देती है, वेदर इट इज योग और एक्सरसाइज। हमारे शरीर के अंदर गुड जो है कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, उन दोनों के लेवल को लेवल में रखना एक्सरसाइज की जिम्मेवारी, एक्सरसाइज से कर सकते हैं। हमारे शरीर के अंदर हमारी काम करने की क्षमता, टॉलरेंस पावर जो है, बियर करने की क्षमता, वो भी हमारी एक्सरसाइज मेंटेन करती है। मोटापे से हमारे को बचाती है। अपनी स्ट्रेंथ अपने अंदर अगर आप एक्सरसाइज करते रहेंगे, अगर आप फिट रहेंगे, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा डेवलप होता है, और स्ट्रेंथ आप, बैलेंस आप इंप्रूव कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी आप बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योग। सो माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन है कि क्या हमारा डू यू थिंक वी हैव अ चांस विदाउट एक्सरसाइज? क्या हम बच सकते हैं एक्सरसाइज के बिना, व्यायाम के बिना? So every individual know that, every individual will answer this question कि नहीं, हम एक्सरसाइज के बिना नहीं बच सकते, हम योग के बिना नहीं बच सकते। क्यों नहीं? फिर भी हम एक्सरसाइज नहीं करते। सो हमें अपने परिवार में, हमारे समाज में, we should motivate each and every individual to go for any sort of एक्सरसाइज। आप अपने आप को तंदुरुस्त रख सके, तभी आप अपने जीवन का ऑब्जेक्टिव जो है उसको अचीव कर पाएंगे, आप जीवन में जीत पाएंगे अगर आप एक्सरसाइज करेंगे। सो दिस शुड बी योर ऑब्जेक्टिव। अब हम बात करते हैं कि हमें सेहत अच्छी रखनी है। सेहत अच्छी रखने के दीज आर दी 4 मॉड्यूल्स। इन चारों को हमारे को बहुत ध्यान देना चाहिए। नंबर 1 इज mindfulness. Mindfulness means meditation. Second one is exercise. Third is diet and fourth is sleep. नींद पूरी करना। और जितने भी नौजवान यंगर जनरेशन हमारे साथ जुड़ी हुई है इस वेबिनार के माध्यम से, थ्रू दिस, उनके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे लिए नींद 7 से 8 घंटे की पूरी करना बहुत जरूरी है। तभी हम
अपने शरीर को। अदरवाइज देयर विल बी लॉट ऑफ ब्रेकडाउन्स इन इंडिविजुअल्स बॉडी, हमारे को मालूम नहीं चलता, बट शरीर के अंदर नुकसान होता रहता है और एक सम टाइम कम्स कि आवर फंक्शनिंग लेवल रिड्यूसेस, बहुत सारा कम हो जाता है, हम उतनी कैपेबिलिटी से काम नहीं करते। इन चारों को हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। व्हाट मेडिटेशन इज? मेडिटेशन मीन्स you have to control your mind, you have to control your brain, because the brain is always floating. आप अभी इस वेबिनार में जुड़े हो लेकिन आपका ध्यान कहीं और है कि आज मैंने बाजार जाना है, मेरा काम रहता है ये घर का, मेरा उस फलाने बंदे को आज मैंने फोन करना है। So you have to, with the help of meditation, you can control your mind, you can control your brain, और इसके with the help of this meditation, mindfulness, आप अपने मूड, सेंसेशंस एंड एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, तभी आप, ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। ये महान हस्ती, दिस ग्रेट पर्सनालिटी बुद्धा, गौतम बुद्धा जी को एक बार किसी ने पूछा कि आप हमेशा मेडिटेशन करते रहते हैं, हमेशा आप ध्यान में रहते हैं, आपका हर 24 घंटे आप ध्यान में रहते हैं, so what you have gained from meditation, इससे आपको क्या लाभ प्राप्त हुआ है? एंड ही बहुत आसान शब्दों में कहा, मेरे को कुछ नहीं इसका लाभ मिला, लेकिन with the help of this meditation I had lost anger, मेरा गुस्सा खत्म हो गया, मेरे शरीर के अंदर से तनाव खत्म हो गया, मेरा शरीर में से डिप्रेशन चला गया, इनसिक्योरिटी खत्म हो गई, डर खत्म हो गया कि मैं जीऊंगा मरूंगा, मैं बूढ़ा होऊंगा मरूंगा, ये सारे डर जो हैं हमारे मेरे शरीर में से चले गए। एंड ये ही हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। नेगेटिव थॉट्स हमारे शरीर के अंदर नहीं आने चाहिए, अगर ये नहीं आएंगे तो वी विल बी हैप्पी एंड फाइन। वी टॉक अबाउट जितने भी धर्म है, वेदर इट इज अ हिंदू, वेदर इट इज अ बुद्धिज्म, वेदर इट इज अ क्रिश्चियनिटी, सब धर्मों ने कहा है कि आपको मेडिटेशन करनी चाहिए, माइंडफुलनेस करनी चाहिए। क्रिश्चियनिटी में कहा है कि मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप उसको थ्रू द स्टडी ऑफ बुक्स, वन सीक्स गॉड, पढ़ने से आ सकता है, वो भी एक तरीके की मेडिटेशन है। गौतम बुद्धा जी ने कहा है कि आपको हमेशा मेडिटेशन, हिंदुइज्म में जितने भी भगवान हैं उन्होंने हमेशा का मेडिटेशन किया है, चिंतन किया है, आपने ध्यान किया है, और सूफीज में भी सिंगिंग, गाने के द्वारा उन्होंने मेडिटेशन किया है। जैन धर्म प्रमोट करता है, जूइज्म प्रमोट करता है, सिख धर्म प्रमोट करता है, एवरी वेयर यू विल लिसन कि आपको मेडिटेशन करनी चाहिए, दिस मच इंपॉर्टेंट मेडिटेशन इज। अब मेडिटेशन करने के तरीके क्या क्या है, कैसे हम मेडिटेशन कर सकते हैं? सो दीज आर दी मेथड्स। हमेशा मेडिटेशन किया जाता है किसी रेफरेंस पॉइंट के ऊपर, किसी चीज के ऊपर ध्यान केंद्रित किया जाता है, और उस ध्यान को हम मेडिटेशन के रूप में लेके जाते हैं। सो ये दिस कैन बी ऑफ एनी मेथड्स, जरूरी नहीं है कि हमें आप चैंटिंग से, मंत्रा से, आप राम का शब्द यूज करते हैं, आप वाहेगुरु का करते हैं, आप अल्लाह का करते हैं, इन सब से आपको मेडिटेशन में आप किसी चीज के ऊपर कंसंट्रेट कर सकते हैं। सो उसके बाद देयर आर मेथड्स ऑफ चैंटिंग, अब उनके बारे में एक एक करके हम देखते हैं। सो हम ध्यान, मेडिटेशन का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप अपने श्वास के ऊपर मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं श्वास के साथ, ब्रीदिंग मेडिटेशन। वाई ब्रीदिंग मेडिटेशन क्यों करते हैं? योग में कहा गया कि आप प्राणायाम करेंगे, आप अपने श्वास के साथ चिंतन करेंगे, श्वास के साथ बातें करेंगे। वाई ब्रीथिंग? बिकॉज ब्रीथिंग इज अ सिंबल ऑफ लाइवलीनेस, लाइवली, कि आप जीवित है। अगर आपके श्वास चल रहे हैं तो आप जीवित है, अगर आपने जीवित रहना है तो आप हमेशा आप मेडिटेशन कीजिए। आपके श्वास अंदर जा रहे हैं शरीर के अंदर और बाहर निकल रहे हैं, इस चीज को महसूस कीजिए, थिंक अबाउट दिस। और उसके कारण जब आप मेडिटेशन करते हैं, जब मेडिटेशन आप ब्रीथिंग के ऊपर समझते हैं, तो आपका सारा शरीर गेट्स क्लियर हो जाता है, उसमें आपकी सारी चिंताएं जो हैं, इमोशंस जो हैं, थॉट्स हैं,
वो सारे जो गलत विचार हैं वो शरीर में से एग्जिट कर जाते हैं एंड द गुड थॉट्स कम्स इनसाइड योर बॉडी। ये एक मेडिटेशन का तरीका है। सेकंड मेडिटेशन का तरीका है इज चैंटिंग। चैंटिंग मीन्स कुछ गाना, कुछ बोलना, कुछ देखना, विजुअलाइजेशन एंड चैंटिंग। हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं, दैट इज मेडिटेशन। किसी चीज को निहारते हैं, आपको कोई वृक्ष अच्छा लगता है, आपको सुबह सुबह उठकर जो है सनराइज के टाइम में सूरज को देखना आपको अच्छा लगता है। सो एनीथिंग विच यू लुक्स, पेंटिंग इज सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन। दिस इज ऑल्सो, आपको कंसंट्रेशन दे रहता है कि आपने कितना ध्यान केंद्रित करना है, आपने उच्चारण करना है। सो कुछ भी, आपको फूल देखने अच्छे लगते हैं, आप फूलों को निहारिए, कीप ऑन लुकिंग, आप आसमान को देखते रहिए, अच्छा लगता है। सो दीज ऑल आर सोर्सेस ऑफ मेडिटेशन। और कई आदमियों को पहाड़ों में जाकर सैर करनी अच्छी लगती है, नदियों के किनारे बैठ जाते हैं, पानी बहता हुआ अच्छा लगता है। ये सारे भी तरीके हैं मेडिटेशन के, इनको बोल देते हैं विजुअलाइजेशन एंड चैंटिंग। सो इससे आप माइंडफुलनेस कर सकते हैं। देन कम्स ऑब्जर्विंग बॉडीली सेंसेशन। शरीर के अंदर आपने महसूस करना है। शरीर के अंदर कैसे महसूस कर सकते हैं? आप अपनी शक्तियों को देख सकते हैं, महसूस करते हैं कि यू सिट क्वाइट, आप बैठकर आप अपने शरीर से बातें करनी है, आप शरीर के बारे में सोचना है, शरीर के अंदर में से आपने थॉट्स जो हैं वो बाहर निकालने हैं और अच्छे चीजें आपने अंदर लेके आनी है। ये है ऑब्जर्विंग बॉडीली सेंसेशन मेडिटेशन, ये भी एक तरीका है। देन दिस इज वेरी मच पॉपुलर in chakra meditation. Chakra meditation, inside our body we have 7 chakras, और ये सारी हमारी एनर्जी जनरेट करते हैं। These 7 chakras generate various energies inside our body, और उनमें जो है रूट चक्रा जो है बेसिक ट्रस्ट है, और ये सारी जो एनर्जीज हैं, this is related to awareness of your body, related to love and healing. So जब ये सारी शक्तियां हमारी मेडिटेशन करती हैं तो हमारा शरीर पुलकित होता है, जाग जाता है, जागृत हो जाता है, awakening of inside from our body। और इसके कारण कुंडलिनी एनर्जी जो है हमारे शरीर में से, वहां से an active approach to awaken the kundalini energy is very important, और उसके कारण हमारे शरीर के बारे में अवेयरनेस, एक्सपीरियंस और उन शरीर के साथ बातें करना, ये सारी चीजें जागृत होती हैं। सो ऐसा ही नहीं क्या कहा गया, मेडिटेशन के ऊपर बहुत सारी रिसर्च भी की कि मेडिटेशन बूस्ट एंटीबॉडीज, इसलिए ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक हमें मेडिटेशन करना चाहिए। इसके कारण हमारा जो है हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं। ये रिसर्च की गई थी 48 बायोटेक वर्कर्स के ऊपर, और मेडिटेशन के बाद उनके शरीर के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में एंटीबॉडीज पाई गई। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर एक मैं छोटा सा एग्जांपल दूं कि आप जब अभी ये इंजेक्शन लगवाने जाते हैं इससे रिलेटेड कोविड का, वेदर इट इज अ कोविशील्ड और कोवैक्सीन, तो आप जब डॉक्टर या नर्स आपके इंजेक्शन लगा देती है, आप आंखें बंद कर लेते हैं। आंखें क्यों बंद करते हैं? यू गोस इन मेडिटेशन पोज, आप चिंतन करने लग पड़ते हैं। सो दिस मच इंपॉर्टेंट है, जब आप आंखें बंद करके ध्यान करते हैं तो आपके शरीर के अंदर से एक हार्मोन सीक्रेट होता है, दैट इज नोन एज चिल पेपर हार्मोन, और वो हार्मोन आपको दर्द नहीं महसूस करने देता। इसके अलावा ये आप लिस्ट देख रहे हैं, ये सारा कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल क्या चीज है? दिस इज अ स्ट्रेस हार्मोन। जब आप तनाव में होते हैं तो आपके शरीर के अंदर तनाव को कंट्रोल करने के लिए कॉर्टिसोल की सीक्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो सीक्रेट होता है जब आप मेडिटेशन करते हैं। सो बीटा एंडोर्फिन, ये सारी चीजें आपके शरीर के अंदर पैदा होती हैं। देन कम्स कि आपके शरीर के अंदर आपको दो आसन जो करने चाहिए, वो कौन से आसन है जो इंपॉर्टेंट है? ये 3 आसन आपकी इम्यूनिटी को बहुत बढ़िया
डेवलप करते हैं, बहुत अच्छे से हमारे शरीर के अंदर जो है स्ट्रेंथ देते हैं, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये तीनों आसन हमारे को करने चाहिए। कौन से आसन? अधोमुख आसन। नंबर आपके ये फर्स्ट पोज पे लेफ्ट हैंड साइड ऑफ योर स्क्रीन इज अधोमुख आसन। ये आसन हमें करना चाहिए। सेकंड इज भुजंग आसना, ये शिल्पा शेट्टी जी कर रहे हैं। ये वाला आसन भुजंग आसना भी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, इम्यूनिटी को डेवलप करता है। सो अधोमुख आसन, भुजंग आसन, एंड थर्ड वन इज परिवर्ता पार्श्व कोणासन। परिवर्ता पार्श्व कोण, हाफ ट्रायंगुलर इसको पोज भी बोल देते हैं। ये आसन भी आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, इम्यूनिटी को बिल्डअप करता है। सो टू द सोसाइटी यू कैन सेंड दिस मैसेज कि ये तीन आसन आप अपने घर पर, अपने परिवार में, अपने समाज में हर एक आदमी को कहिए। ये तीनों आसन आपकी इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे, बहुत ज्यादा बिल्डअप करेंगे। सो द जिस्ट फ्रॉम दिस इज कि एक्सरसाइज से हमें बहुत सारे लाभ हैं। आपको नींद अच्छी आएगी, आपको आपकी रेस्टिंग पल्स रेट जो है, दिल की धड़कन है, वो कम होगी अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, व्यायाम करेंगे। आपकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इनसाइड आवर बॉडी अच्छी करेगी, कैलोरीज बर्न होगी, आपका जीवन लंबा होगा और आपको पसीना भी आएगा। तो इसलिए वी हैव टू गो। सो द क्वेश्चन इज योग, डिप्रेशन एंड ब्रेन, ये हमारे ब्रेन को कैसे कंट्रोल करता है? जब आप व्हेन यू गोज फॉर एक्सरसाइज और योग, हमारे शरीर के अंदर से these are the hormones which are secreted। कौन सा हार्मोन? एंडोर्फिन। एंडोर्फिन कौन सा हार्मोन है? आपको दर्द और तनाव में जो पैदा होता है। अगर आपको तनाव है, आपकी स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, तो यू आर मोर स्ट्रेंथफुल, तनाव भी आपको ज्यादा करता है। तो उसमें कौन से ये तीन हार्मोन, डोपामाइन, नॉरएपिनेफ्राइन एंड सेरोटोनिन, ये तीनों हार्मोन्स सीक्रेट होंगे और इनका बैलेंस जो है सीक्रेट होना। सो एंडोर्फिन्स आर आल्सो नोन एज फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स, के आपको तनाव में, आपको डर है, आपको बचाव करना है अपना शरीर को, तो ये हार्मोन्स आप एक्सरसाइज के कारण, जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो ये हमारे शरीर में सीक्रेट होंगे और आप तनाव मुक्त, यू विल बी स्ट्रेस फ्री। आपके शरीर के अंदर में से स्ट्रेस जो है खत्म हो जाएगा। एंड इम्यूनिटी का, एक्सरसाइज का, जैसे जैसे आप एज बढ़ रही है, आप बुढ़ापा की तरफ जा रहे हैं, तो आपको यंग रखने में भी योगिक एक्सरसाइज, योग एंड एक्सरसाइज इज वेरी मच बेनिफिशियल। क्योंकि आपके जो डीएनए के एंड्स हैं, डीएनए के, वो डैमेज होने शुरू हो जाते हैं उम्र बीतने के साथ, बुढ़ापा जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है। सो वो जो डीएनए एंड्स हैं, उनको बनाए रखने के लिए, उनको टू कीप देम स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी, यू नीड टू गो फॉर एक्सरसाइज। एंड साइंटिस्ट हैज प्रूव्ड दैट यू हैव टू एक्सरसाइज अगर आपने एजिंग प्रोसेस को डिले करना है। इसको आप रोक तो सकते नहीं है, लेकिन इसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं। सो यू हैव टू गो फॉर एक्सरसाइज। उसके लिए आपको एक्सरसाइज किसी भी तरह से करनी जो है, अगर आप बुढ़ापे से बचना है तो आपको एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है। इसके कारण ही आप अपना जीवन कर सकते हैं। सो एक्सरसाइज जो है, ये भी कहा गया कि एक्सरसाइज आपको स्ट्रेस को मैनेज करने में भी बेनिफिशियल है। कैसे बेनिफिशियल है? कि हमारे, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारे शरीर के अंदर कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन सीक्रेट होगा और वो हमारे शरीर के अंदर हमारी स्ट्रेस को बर्स्ट करेगा, एक्सक्रीट आउट करेगा और हमारे शरीर में से खत्म होंगी सारे तनाव और सारी चीजें। तो इसलिए हमारे को एक्सरसाइज करनी जरूरी है। अब कुछ मैं बातें आपको बताऊंगा कि कौन सी चीजें खाने से हमारे को इम्यूनिटी हमारी स्ट्रांग होगी। सो इस टू इंप्रूव योर इम्यूनिटी व्हाट यू नीड टू हैव, जितने भी सिट्रिक फूड्स हैं, दीज आर वेरी मच बेनिफिशियल। विटामिन सी इज सो गुड। ये एक रिसर्च की गई थी कि जो 23% जो है, अगर आप इसका लेंगे तो आपको ना सर्दी ना जुकाम होगा। मीन्स ये आपको
कोविड जैसे बीमारियों से बहुत ज्यादा सुरक्षा कर सकता है विटामिन सी। तो इसलिए इन दिनों कोविड से बचने के लिए आपको विटामिन सी, नींबू, संतरा, मौसमी, ये सारी चीजें की इंटेक बढ़ानी चाहिए। ये सारी चीजें हमारी सुरक्षा करती हैं। इसके बाद आ जाता है कि घर का बना हुआ खाना इज सो गुड। और ये क्यों गुड है? बिकॉज इट इम्प्रूव्स द गट। आपकी अंदरली लेयर्स हैं, आपके इंटरनल ऑर्गन्स की इंटरनल लेयर्स हैं, वो मजबूती हासिल करती हैं। दे गेट स्ट्रेंथन विद द होम कुक्ड फूड। उसके अंदर कर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन पिकल्स, अचार जो हम खाते हैं, वो भी हमारे इंटरनल गट को स्ट्रेंथन करता है। सो इसलिए अचार खाना भी जरूरी है और घर का भोजन खाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो हमारे लिए ये हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा और जो वायरसेस, पैथोजेंस है, उनको मारेगा और हमारा शरीर। अपार्ट फ्रॉम दीज आर एंटीऑक्सीडेंट्स। ये भी हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करते हैं। ब्रोकली, स्पाइनच, बीटरूट, टोमेटो, कैरेट एंड बीन्स, इनकी भी आप इनटेक आप बढ़ाएंगे तो इससे आपको लाभ ज्यादा मिलेगा। कोविड-19 से भी आप बचा सकते हैं। विटामिन डी इज वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन डी के हमारे दो ही सोर्स हैं, या सनलाइट और मिल्क। और इसलिए विटामिन डी आजकल डेफिशिएंट है कि ना तो हम धूप में निकलते हैं, बाहर निकलते नहीं है, एक्सरसाइज हम करते नहीं है, एसी में बैठे रहते हैं, घर से निकले कार में, कार से निकले ऑफिस में पहुंच गए। सो इसलिए विटामिन डी डेफिशिएंसी आजकल, विटामिन डी एंड प्रोटीन डेफिशिएंसी आजकल बहुत ज्यादा अपनी खासकर इंडियन पॉपुलेशन में बढ़ती जा रही है। सो इन चीजों का भी इनटेक आप करने का है। और जो चौथा पिलर था, लास्ट पिलर, दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज स्लीप। आप देख रहे हैं कि इवन जानवरों को भी नींद आती है, जानवर भी सोते हैं। आपका सोने का समय है, फिक्स समय आपका होना चाहिए कि आपको रात के 10 बजे आपके शरीर के अंदर से एक हार्मोन सीक्रेट होता है। कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है? मेलाटोनिन। मेलाटोनिन नाम का आपकी एक शरीर की एक घड़ी है जिसको हम बोल देते हैं व्हाट वी कॉल इज सर्काडियन रिदम। उस रिदम में आप काम करते हैं। सो जब जैसे ही आपको रात के 9 या 10 बजते हैं, आपको नींद आ जानी शुरू हो जाती है, आपका हार्मोन सीक्रेट होगा, ये नींद की घंटी बज गई, आपके शरीर के अंदर से आपको वो हार्मोन सीक्रेट होगा जिसका नाम मेलाटोनिन है। एंड वंस दैट हार्मोन इज सीक्रेटेड, आपको नींद आएगी, आप सो जाएंगे। सो दिस इज द फिजियोलॉजी बिहाइंड द स्लीप। लेकिन हम उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। हम 10 बजे नहीं सोएंगे, मेलाटोनिन सीक्रेट हो गया, आपको नींद नहीं आई और आपकी नींद बिखर गई, आपकी नींद टूट गई। सो आपको दोबारा मेलाटोनिन सीक्रेट होने में इज वेरी डिफिकल्ट। सो वी हैव टू अपना टाइम रिदम सबको सेट करना है। दिस इज द बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ स्लीप। आपको 8 बजे, आपको सुबह आप अलार्म ना भी लगाएं, अगर आप बड़ी पंक्चुअल हैं, आपको 5 बजे 6 बजे जितने बजे आपका उठने का टाइम है, उतने बजे जाग आ जाती है। जानवरों को कौन से अलार्म लगाते हैं? वो अपने आप सुबह अपने टाइम पर उठ जाते हैं, टाइम पर सो जाते हैं, टाइम पर उठ जाते हैं। सो दिस मच इंपॉर्टेंट स्लीप। इन चारों पिलर्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, डाइट, मेडिटेशन, एक्सरसाइज एंड स्लीप, इन चारों में से अगर हम स्लीप को नहीं प्रॉपर लेंगे तो रेस्ट ऑफ द 3 अगर हम प्रॉपरली करेंगे भी तो दे विल बी यूजलेस, उनका कोई काम नहीं रह जाएगा। बिकॉज स्लीप अगर पूरी नहीं होगी तो हमारी रिकवरी पूरी नहीं होगी एंड वी विल नॉट बी एबल टू डू रेस्ट ऑफ द ड्यूटीज अपनी काम करने। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द लास्ट जिस्ट फ्रॉम विच आई वांटेड टू कंक्लूड कि हमें एट एनी कॉस्ट मेक फिटनेस योर फेवरेट हैबिट। आप अपना एक एक्सरसाइज अपना एक हिस्सा बना लीजिए जीवन का, कि आपने एक्सरसाइज करनी। जैसे आपको भूख लगती है, नींद आती है, आप घर के कामकाज करते हैं, एक्सरसाइज भी आप अपने लिए एटलीस्ट अपने शरीर के लिए आधा घंटा अपने लिए जरूर निकालें, एक्सरसाइज करें। उसके लिए आप अपना जरूरी है, तभी हम बच पाएंगे इस कोविड-19 पैंडेमिक से भी बचें। एक लास्ट जो है उसके बाद हम थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स
for giving me the opportunity for this wonderful platform कि हमने आज इस वेबिनार में डिस्कस किया कि हाउ एक्सरसाइज. So just this is the only message which I wanted to give you is कि हमें हमेशा ही एक्सरसाइज करने के लिए, चाहे किसी भी तरीके से एक्टिव रहने के लिए, बीइंग वी आर इन एजुकेशन सिस्टम, हमें सोसाइटी को मोटिवेट करना है, हमें परिवार को मोटिवेट करना है, हमें अपने जितने भी लोग बुजुर्ग हैं उनको कोशिश करनी चाहिए जोड़ने के लिए कि आप एक्सरसाइज करिए, तभी हम इस पैंडेमिक से, महामारी से बाहर आ सकते हैं और वी कैन बी हेल्दी, फिट एंड फाइन. ये मैसेज के साथ आई कॉन्ग्रेचुलेट डॉक्टर Abha Khetrapal, principal of this very prestigious institute, Dr. Major Geeta ji, for giving me the opportunity और इतना बड़ा आपने प्लेटफॉर्म to so many peoples के जो आप YouTube में भी बहुत सुन रहे हैं, बहुत सारे लोगों को इस चीज का लाभ मिलेगा and they will be really benefited from this webinar और जिसकी जरूरत भी है. So I congratulate and thanks each and everyone, जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी कैडेट्स हैं, सब जुड़े हुए हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वन एंड ऑल. थैंक यू वेरी मच. Thank you, sir. Thanks a lot. It has been a wonderfully informative session, sir. और आपके दिए हुए मंत्र हमेशा हमारे साथ रहेंगे और हमारा मार्गदर्शन करेंगे. स्पेशली मैं यहाँ पर 2 मंत्र जो आपने दिए हैं उनकी तरफ बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स का भी ध्यान दिलाना चाहूँगी कि वो हमें ज़रूर हमेशा के लिए याद रखने हैं. एक तो ये कि योग का अर्थ सर आपने बहुत ही सजे हुए और थोड़े शब्दों में बहुत ही वंडरफुली आपने उसे समझाया है कि योग का अर्थ है जुड़ना, जुड़ना अपने आप से, अपनी आत्मा से, समाज से और अपनी आत्मा के जरिए सारे संसार से. सो थैंक यू सर. हम इस मंत्र को याद रखेंगे और आपने हाफ एन आवर हमें जरूर जो है वो डिवोट करना है अपने फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए. दैट इज नॉट अ बिग डील. ये हम सबको जो है आज यहाँ से एक प्रण करके चलना है. सर ने इतना कॉम्प्रिहेंसिव व्यू जो है पूरे योग थेरेपी जो है, सर ने कहा कि योग एक एक्सरसाइज नहीं है, इट्स नॉट मियरली फिजिकल एक्सरसाइज. ये क्या है? एक थेरेपी है. और कैसे थेरेपी? अ होलिस्टिक थेरेपी. एक जो सभी व्याधियों को, विकारों को, हमारे डिसऑर्डर्स को, बी फिजिकल, स्पिरिचुअल और इमोशनल, मेंटल, सबको जो है एड्रेस करती है ये थेरेपी. तो हमें आज ये प्रण करना है, ये नीड ऑफ आवर है और हम इस प्रण के साथ ही जो है सर को धन्यवाद करते हैं इतने इंफॉर्मेटिव और इंस्पिरेशनल आपके एड्रेस के लिए. थैंक यू सो मच सर. आपने हमारी थीम योग होलिस्टिक थेरेपी ड्यूरिंग पैंडेमिक, आपने इसे बिल्कुल सार्थक सिद्ध कर दिया. आपने इतना अच्छा जो है एक होलिस्टिक लेक्चर था सर आपका योग पर. थैंक यू सो मच सर. इट हैज बीन अ फीस्ट फॉर us all, your address sir, and it was really, it has been a boon to listen to you. Thank you so much sir. Thank you. And dear participants, अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई कुछ आप और योग के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं या कोई भी आपका प्रश्न है तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए. सर अभी हमारे साथ ही हैं तो हम उसे जो है कोशिश करेंगे सर से आपकी क्वेरी को और आपके क्वेश्चन का आंसर लेने की. आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेरीज और क्वेश्चंस. वैसे तो सर का लेक्चर ही ऐसा है कि उसमें जो है यस वी आर सो स्पेल बाउंड सर बाय योर लेक्चर रियली.
मुझे लगता है कि हम सुनने वाले भी बिल्कुल खो गए हैं एंड every query and every question has been answered. हाँ जी, थैंक यू मैडम. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, ma'am. And we would like to be associated with you forever, sir. हाँ जी, definitely. I even myself. More and more, sir. Yes, sir. Okay, thank you. Thank you so much, sir. Okay जी, okay. Thanks for this wonderful session. Thank you. Dear participants, we are very soon going to listen to our next eminent speaker, Dr. Fayaz Ahmed, who will be joining us shortly. Just bear with us. Stay tuned with us.
Okay, participants, I know my cadets are also there, students are also there. So जब तक हमारे दूसरे रिसोर्स पर्सन जो कि बहुत जल्द आपके सामने आ रहे हैं और अपना जो है एड्रेस आपको जो है वो एड्रेस करेंगे, एड्रेस ऑन योग, एंड आई एम श्योर आप सबको पसंद आ रहा है और आपको जो है बेटा योग को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। आपने अभी प्रोफेसर निशांत सिंह देओल जी को सुना और कितना उन्होंने जो है आपको सिंपल और जो है बिल्कुल जो अंडरस्टैंडेबल था हम सबको, जो भी उन्होंने कहा इट डायरेक्टली वेंट इनटू आवर हेड। तो आपने उससे इंस्पायर होना है, उसे जो है अपनी ज़िंदगी का योग को हिस्सा बनाना है। And if you want to stay physically, mentally, emotionally, spiritually fit, you will have to, make yoga part and parcel of your life, an essential part of your life. जब तक हमारे सर आते हैं तो मैं थोड़ा एनसीसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना चाहूँगी, बिकॉज सिर्फ एनसीसी कैडेट्स ही पार्टिसिपेंट्स की जो लिस्ट है उसमें देयर आर नॉट ओनली एनसीसी कैडेट्स एंड दिस, क्योंकि योग जो है हमारा एक सबसे रिलेटेड टॉपिक है, सबके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए हमने सभी स्टूडेंट्स को भी इसमें इन्वॉल्व किया है। तो मैं आप सबको थोड़ा सा एनसीसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना चाहूँगी, इफ आई हैव टाइम। हेलो सर। Dear participants, our next speaker, eminent speaker, has joined us, and I'm going to introduce him, and we are going to listen to his talk very soon. So, dear participants, in this session, we are going to listen to another precious gem that we have today with us, Dr. Fayaz Ahmad Ikbar, Assistant Professor and Coordinator, Department of Studies and Research in English, Rani Channamma University PG Center, Vijaypura, Karnataka. So, sir is from Karnataka. A great teacher, a great mentor of students and research scholars of English language and literature, Dr. Fayaz Ahmad is a multi-talented personality. He is an active member of a great many professional and educational bodies within and outside India, which speaks a lot about his genius and also about his devotion towards his work. So he is such an inspirational personality for us all. Dr. Fayaz has published more than 25 scholarly research papers in celebrated national and international journals, has delivered lectures as resource person in national and international level conferences, workshops, and symposiums on both offline and online modes. He has also organized 4 workshops on research methodology in English language and literature and 12 lecture series on various topics during lockdown, which is, I think, his great on Zoom platform. And apart from all this, Dr. Fayaz Ahmad has also one book to his head. Sir, really feeling blessed to have you at this moment. Listening to you has always been a boon to the listeners. Now I request you, sir, to address us all. Sir, please take charge. Dr. Fayaz Ahmad, sir, please.
Sir, are you there? So carry home messages for you. You have to do yoga, like sir said. Take a proper diet, do exercise. He especially told about 3 asanas. Yeah, good morning, everybody. And sorry for the technical glitch from my side. I think so. Yeah. Respected. Yeah, am I audible now? Yeah. Restrictions are there, sir. But finally, we are happy to have you. Thank you so much. Yes, sir. Welcome, sir, once again. Thank you. Okay. Yeah. I just want to give a brief introduction of our second eminent speaker. And in this session, we are going to listen to another precious gem that we have today with us, Dr. Fayaz Ahmed H. Ilkal, Assistant Professor and Coordinator, Department of Studies and Research in English, Rani Chennamma University, PG Center, Vijaypura, Karnataka. So, sir is from Karnataka. A great teacher, a great mentor of students and research scholars of English language and literature, Dr. Fayaz Ahmed is a multi-talented personality. He is an active member of a great many professional and educational bodies within and outside India, which speaks a lot about his genius and about his devotion towards his work. He has published more than 25 scholarly research papers in celebrated national and international journals, has delivered lectures as resource person in national and international level conferences, workshops, and symposiums on both offline and online mode. Dr. Fayaz has also organized 4 workshops on research methodology in English, English language and literature, and 12 lecture series on various topics during lockdown on Zoom platform, which is indeed a great service during this period of pandemic. Apart from all this, Dr. Fayaz Ahmed also has one book to his credit. Sir, really feeling blessed to have you with us at this moment. Listening to you has always been a boon to the listeners, as I have already heard you many a time. Now I request you, sir, to deliver your lecture. Dr. Fayaz Ahmed, please. Yeah. Thank you, Major Geeta Sharma, for giving such a pleasant introduction of me. How much I deserve, I don't know. But then, please, sir, you deserve more than this. Thank you. I am humbled, ma'am. I am humbled. And then at the outset, I would like to congratulate the organizers of this webinar, because during this second wave COVID strain, this has been the need of the hour. Other than prayers, I strongly believe that yoga can heal us both, and not only heal us, but it can cure also. And let us not go into debate about which one is better thing, but nevertheless it can be a supplement also. And then the patron, I would like to congratulate her also, Dr. Abha Ketapal, the principal of D.A.V College for Girls, Yamunanagar, Haryana. And then the organizer, of course, Major Geeta Sharma and Miss Lovely Raj, as well as the guest of honor, Colonel Ajay Pal Kaushik and Colonel APS Sandhu. And it has been a privilege for me also because such I don't feel like disturbing you.
प्लीज Yes. कैमरा ऑन कर दीजिए प्लीज. Who, ma'am? Yeah, it is an honor wherein the guest of honor, Colonel Ajay Pal Kaushik and Colonel APS Sandhu have joined this webinar. Photograph, sir, if you please, for some moments, if it is possible. For media coverage and all that. Is it to me, ma'am? Yeah. No, I don't. Not to worry, sir. Okay. Okay, shall I go ahead, ma'am? Yes. Please. Okay. And then even keynote speaker, Dr. Nishan Singh Deol, he presented his presentation just like Sunny Deol with a 2.5 kilo ka mukka. It has been and I don't think that he has left no stone unturned when he has presented his presentation on yoga. And since he is from physical education, and I strongly believe that it has to come into our curriculum as a compulsory part of our curriculum, irrespective of whether it may be elementary or high school or at UG level or at PG level. It has to be it has to be mandatory. And I also take pride to inform the participants that my wife has also done her PG diploma in yoga studies. And most of the people, they are under the misconception that, see, yoga is not our cup of tea. And yoga, it has to be practiced and preached by only a specific group of people. No, I'm sorry. It's not like that. Yoga can be practiced and preached by any person, irrespective of geographical location, caste, creed, so on and so forth. I also practice, and my wife also practices it. And I strongly recommend that it has to come into our curriculum. So I don't know how far I will be doing justice to my presentation, since Dr. Nishan Singh has spoken at length about all these issues related with yoga. But then also I will make a humble attempt to convince you all and give you information about the other aspects of yoga. I hope the screen is visible to you all. Yeah. Yes, sir. The topic is yoga for health, which is the need of the hour. And then before hopping upon yoga for health, I would like to give you some information about yoga, which already the earlier presenter has also presented it diligently, but then also I had prepared my PPT. Then here, what is yoga? It has been a question for many of them. For me, especially because we don't have any standard definition as such for that, if I'm not wrong. Yoga can be considered as a means to join or yoke together the mind, body, and spirit. And the aim of yoga for health is to bring balance into the body physically, mentally, and emotionally. This is why yoga becomes very, very important. And by connecting to ourselves through the breath, we can bring our bodies from a state of dis-ease, which can be brought out with ease to a place of health. And since time immemorable, there have been
discussions, debate, and acceptance also about the proven benefits of yoga. And unfortunately, we Indians, we don't know the value of it. Instead of practicing yoga and preaching it, we are hitting gyms. And yoga can be practiced by any person, even a disabled person can also practice it. And there is no time limit, time constraint. You can practice it for 5 minutes, for 10 minutes, or half an hour, 1 hour, and you can practice it at any given place. So when we have to meditate, there are also some places where we have to go to those particular places, even for gym and for offering our prayers. We have to go to our mandir, mosques, churches. But yoga, you can just you should have some space wherein you can lie, you can stretch yourself at any time, at any given time. And especially women will be more benefited out of it, because they will be 24/7. They will be preoccupied with one or the other work, and they need it very much. It is very essential for them, wherein this helps them not only to keep themselves fit physically, but also mentally as well, especially because this is the college for girls. I would like to recommend this for girls, that it will bring well-being for you. You can become physically as well as mentally and spiritually strong. And I will be also giving in the coming slides about the benefits of yoga, and then the health benefits of yoga is very much documented by the International Association of Yoga Therapists. It can also it can be studied as a therapy, and based on literature searches, it reports the following psychological benefits of yoga based on regular practice of traditional yoga poses, breathing exercises, and meditation. And the other benefits of yoga are stable autonomic nervous system equilibrium. So it is a scientific term which relates with the free flow of our blood in our nerves, which can also check our BP, high BP as well as low BP. And it ensures the free passage of blood into our veins. And pulse rate also decreases. Respiratory rate decreases, blood pressure decreases. These are the benefits of yoga. And even there is one term called EEG, that is alpha wave increase. Theta, delta, and beta waves also increase during various stages of meditation, which can be very helpful for our health. And EMG activity decreases, cardiovascular efficiency increases, respiratory volume and vital capacity increases, especially now in second wave. The common feature of death in COVID second strain has been heart attack, other than the corona virus. Many of them have succumbed to this heart attack, and it is mainly because of cardiovascular related issues. So yoga will check this, and the efficiency also increases there, where it pumps correctly, neither more nor less. And even the respiratory volume and vital capacity increases, wherein you can hold your breath, you can release your breath. That ensures how healthy your lungs are. How many seconds you hold the air into your lungs, that ensures the efficiency and the health of your lungs. And now it has been pivotal to have a healthy lung, because COVID and corona attacks your lungs first. And it is a prerequisite for us. It is a very essential for us to keep our respiratory system healthy. And it also intestinal function normalizes, and endocrine function normalizes, excretory functions improve, and so on, so forth. So all these are medical terms which you may also find help yourself by searching it in Google.
And by this, even posture improves also. Most of us now, because of this lockdown, many of us have been sitting at home, and we have been involved into online lectures, both teaching and learning kind of a thing. So we have been forced to sit on our chair and in front of the table for longer period of time. So by practicing yoga, it improves our posture as well. And strength and resiliency increases, endurance increases, energy levels increase, and weight normalizes. See, most of them, because of lockdown, again, most of them we tend to gain weight. So by practicing yoga, that will check our weight. And because of that reason, even our sleep improves as well. See, nowadays, even I am also feeling that what time we are having our breakfast, lunch, dinner, there is no timing at all. Jab aankh khule tabhi savera. So it has happened just like that. So yoga has a number of benefits. So it helps our sleep also, and immune function normalizes, and it also. So they see one more medical term which I'll be using here is psychoneuroimmunology, which is very much deals with our mental health. Because of stress, especially in 21st century, in our age, we are suffering with this, and yoga keeps it in check. Medical field of investigation that studies the relationship of the mind and body as well as its effect on health and disease. See, these are all interconnected, mind and body. If there is no coordination between mind and body, it has an impact on our spirit. And when we practice meditation, that will have, it gives, it sends vibrant, positive vibrations to our mind and body. A healthy mind keeps a healthy body. If your mind is not sound, then healthy, then your body is definitely going to get affected by it. And because of those reasons, we are having BPs, and then we are having diabetes, and so on and so forth. And Hippocrates, the father of Western medicine. Of course, he was not Hippocrates, but Hippocrates, he is being considered as the father of Western medicine. And he taught his students to look at psychosocial factors surrounding individuals in order to understand certain diseases. Even our circle, जिसके साथ हम बैठना उठना करते हैं, that also has a very important impact on our well-being. And if we practice, not only you should practice yoga, but you should also preach it. And when you preach it, the people who follow you, that is how you make a good environment. So not only the body gets polluted, even the mind gets polluted. And yoga is something which allows you to remove all those pollutants from your body as well as from your mind. You will always think positive. And one more, CNS and immune system. It is very much related with the backbone issue. So recent studies show a bidirectional relationship between the central nervous and immune system. And researchers continue to explore the mysteries of how diseases affect behavior as well as the role of psychosocial interventions on preventing. Hello. Yeah. Yes, sir. Yeah, I thought that I lost connection. So I'm there, right? Right. I'm very much audible and visual. Yes, Yeah. sir. Yeah. Okay. So
Yes, see, even now there वो बोलते हैं ना मानसिकता. So people, those who have been infected, they are being treated very badly. Even people are not getting cremated according to our religious rituals. And even for getting vaccinated also, there are so much of debate is going on. People are not sure whether to take it or not. So it is only because of those who do not preach and practice yoga. So that also makes our will very strong as to how we take up, how we address the situations in our life. So if we are infected or we are going through some disease, so it will have an impact on our psychology, on our psychology. So by practicing yoga, that can have a check on us, and it also decreases the severity of illness and positively impacting disease outcomes. And then stress response, fight or flight. So most of the times we are under this dilemma, whether to continue or to quit, whether to succumb or to rebel. So in order to overcome, it is only because of the stress and how we respond to it that plays a very vital role. So during stress issues, heart rate increases, blood flow is shifted to skeletal muscles, pupils dilate, immune function altered, and so on, so forth. So there is one term called allostatic load. So why we undergo this stress? It is because of this load. And here it refers to the long-term effect of chronic stress on the body, the wear and tear of our body. Researchers believe that increases in the allostatic load increase vulnerability to certain diseases. So this leads to a disease which are related to our psychology. So yoga is an antidote for stress and potentially powerful complement to living a healthy and balanced life. So let us give you some information about the history of yoga. And we have got some archaeological traces. And yoga's existence is found in stone engravings that date back to around 3000 BC. Both yoga and shamanism have similar characteristics in their attempts to improve health and promote healing through spiritual meditation. So it is the oldest known yoga teachings are found in the Vedas, the sacred scripture of Brahmanism that is the basis of modern day Hinduism. The Vedas are said to be the oldest sacred texts still used today, and most of the anthropologists agree that an oral tradition existed long before a literary tradition, which gradually set in from about the 2nd century BCE. Yoga was used as a tool to live in harmony, mind, body, and spirit. And yoga also shares some characteristics with Hinduism and Buddhism. And at the age of 35, Siddhartha Gautama, the first Buddhist to study yoga, achieved enlightenment through yoga. And he wrote the Yoga Sutra around the 2nd century in an attempt to define and standardize classical yoga. And it consists of 195 sutras or threads, as well as 8-fold path, which he calls it Antanjali.
And then 8 limbs of classical Patanjali. So, yeah, 8 limbs of classical yoga, which has already been touched upon by the previous speaker. Those 4 or 8 limbs of classical yoga are Yama, Niyama, Asana, Pranayam, Pratyahara, Dharana, Dhyana, and Samadhi. And I have given you the English meaning of those terms over there. And Swami Sivanand, he is a well-known teacher and doctor in Malaysia who opened schools in America and Europe. The most famous of works is the 5 principles of yoga, which are Shavasana, Asanas, Pranayam, proper diet, and Dhyana. So proper relaxation, proper exercise, proper breathing, and positive thinking and meditation. So here there is a table of different popular, especially popular yoga styles, which have been preached by such sages and practitioners. One is I will not go in detail about it. You can just take a screenshot of this. So living mindfully through the breath, especially in this in order to fight against corona, we have to keep our respiratory system very healthy. So I would like to give you some information about breath awareness. So we speak of sigh of relief, of gasping in horror, or holding the breath in anticipation, or being breathless with excitement. So laughing, sighing, yawning, yelling, gasping, screaming, nature provides us with all these responses to help us fulfill the emotional demands of the instant. Physically, the breath gives us the extra oxygen we need for all these functions. So pranayam, breathing in the life force. Here, by deliberately controlling the breath, we can consciously alter many physical and emotional functions of the body, like the heartbeat, blood flow, mental states, and hormones. The art of yoga breathing. Here, begin by observing the natural inhalation and exhalation of your breath without changing anything. So sometimes we also forget it is an art to inhale and exhale. How much we have to take in, how much we have to hold, and how much we have to leave. As you inhale, say to yourself, I notice I'm inhaling, and as you exhale, say to yourself, I notice I'm exhaling. Stay focused on the breath for 5 breaths cycles. You can practice it now also. So, breathing, you start to inhale deeply through the nose while filling the belly up with your breath. Expand the belly with air like a balloon. So while I'm presenting, you can just practice it, or you can try these. So on each exhale, expel all the air out from the belly through your nose. Draw the navel back towards your spine to make sure that the belly is empty of air. Repeat this deep belly breathing for 5 breath cycles. If you can't practice it now, you can just take a screenshot of it and try to practice it at leisure. So in breathing part 2, the next inhale, fill the belly up
with air as described before. Then, when the belly is full, draw in a little more breath and let that air expand into the rib cage, causing the ribs to widen apart. And as you exhale, let the air go first from the rib cage, letting the ribs slide closer together, and then from the belly, drawing the navel back towards the spine. Repeat for 5 breaths. You can just take a screenshot of this also, and you can practice. And on the next inhale, fill the belly and rib cage up with air as described before. Then draw in just a little more air and let it fill the upper chest all the way up to the collarbone, causing the area around the heart, which is called the heart center in yoga, to expand and rise. Since we are online, unfortunately, we can't show it physically, but it has been a very theoretically, but I am giving you certain hints which you can practice at whenever you feel time or get time. And then as you exhale, let the breath go first from the upper chest, allowing the chest to drop slightly, then from the rib cage, letting the ribs slide closer together. Finally, let the air go from the belly, drawing the navel back towards the spine. And I would recommend you, it will be better, beneficial if you do it empty stomach early in the morning. And then think of water pitcher. As you inhale, you fill the water pitcher, your body from the bottom up. And as you exhale, you empty the water pitcher, your body from the top to the bottom. You can just compare your body while you're breathing to this water pitcher and how you inhale and exhale. So putting it all together, the previous practices, whichever I had told you, you're practicing 3-part breath. Continue at your own pace. Though I have recommended you to practice it 5 times or 10 times, but it's left to you. So since if you are an amateur, if you don't know, if you are practicing it the first time, you started by small breaths, 2 breaths, 3 breaths, 5 breaths, 10 breaths, and slowly, gradually, as you get habituated, your body gets habituated, you can increase those breaths also. And then continue at your own pace, eventually coming to let the 3 parts of the breath happen smoothly without pausing. Continue for about 10 breaths. So I would like to end with a quotation. We know that life begins with the first breath and ends with the last. But it is how we breathe in between that greatly impacts how well we live this life. Thank you. And you can reach out to me. This is my mobile number and email ID. So to conclude, I once again extend my heartfelt gratitude to the organizers and Major Geeta for giving me an opportunity to present or put forth my views. I hope I have given some information, good information, healthy information for the participants, which they will remember and cherish. Thank you once again. Thank you, sir. You have done full justice to your today's job, sir. And thank you so much for your amazingly informative lecture, sir. And taken together, both of the lectures, sir, they are giving us the feeling of now Dharmendra ka mukka. So we are really grateful to you for such a wonderful lecture, sir.
And whatever you said, it directly went into the head of the listeners. And you talked about all aspects of yoga, and especially practical aspects of yoga, that how it is easily available to us. इसके लिए कुछ हमें पैसा खर्च नहीं करना, कोई स्पेशल स्पेस नहीं चाहिए, प्लेस नहीं चाहिए. सो कोई भी पीसफुल कॉर्नर लेकर के we can practice yoga, and we will sir keep in mind the mantra given by you. Practice and preach yoga, that we are going to do. And I would request all the cadets, all dear participants, to keep and practice this mantra, and I'll be practicing myself also. And this, we all know that we need to practice and preach it, especially during such troubling times as coronavirus pandemic. So your address, sir, it covered all aspects of yoga. Thank you so much for your useful and lively talk, despite certain technical, problems. Yes, it went on very well. And now I invite my dear friend, one of the organizers, Miss Lovely Raj, to present vote of thanks. Madam Lovely Raj. Thank you, Major Geeta. On behalf of NCC Wing and entire fraternity of D.A.V College for Girls, Yamunanagar, I, Lovely Raj, Assistant Professor, Department of English, first of all pay my sincere thanks to Almighty God for making today's webinar a grand success. By His blessings and grace, we are able to organize a successful event. On behalf of D.A.V College for Girls, Yamunanagar, I extend my heartfelt vote of thanks to our learned resource persons, Dr. Nishan Singh Deol and Dr. Fayaz Ahmed, for sparing precious time and enlighten us with their valuable thoughts. Indeed, listening to them was a feast for the ears. I also want to thank our guests of honor, Colonel Ajaypal Koshish and Colonel APS Sandhu, who accepted our invitation and graced the occasion with their esteemed presence. A special mention of our worthy Madam Principal, being the catalyst that inspired us to do our the best and stand as a with deep sense of regard. I thank Madam Principal Dr. Abha Kitrapal. I am very grateful to my fellow colleagues, NCC in charges, NCC cadets, students, and all other participants of this webinar. It would not have been successful without their active participation. I also want to thank Dr. Rachna Soni, Associate Professor and Head of the Department of Computer Science, for her consistent and unconditional support. Last but not least, I thank Mr. Anil Nanda, Mr. Inderjeet Kathuria for rendering technical assistance before and after the webinar. Once again, I thank everyone for taking time and being the part of this webinar. Now, feedback link has been shared in chat box. So it's my humble request to all of the participants, please take feedback link for e-certificates. And thank you very much for be here and have patience. Now we are closing our program with NCC song Hum Sab Bhartiye Hain. Thank you all. Dear cadets and students, आपको पता है क्या प्रोटोकॉल है एनसीसी सॉन्ग का, बट वी आर सिटिंग एट यू ऑल आर एट होम, तो आप बैठे बैठे सावधान हो सकते हैं एंड पीसफुली लिसन टू द सॉन्ग.
Thank you all. फीडबैक लिंक चैट बॉक्स में शेयर कर रहे हैं, आप उसे वहां से ले सकते हैं। फीडबैक प्रोफॉर्मा फिल करते ही आपको ई सर्टिफिकेट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस प्रेजेंस। कैमरा ऑन है, मुझे टीम्स पे शेयर करना है। Now I request all the participants to please switch on your cameras. Please switch on your cameras. We want to have a collective photo. We want to see you all. Please switch on your cameras. स्टार्टिंग में उनका चला ही किसी ने ऑन नहीं किया। Thank you, dear participants. I'm sure जो आज हमें सुना है, हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है योग के बारे में from both of the knowledge resource persons, हम सब उसे अपने जीवन में अपनाएंगे, क्योंकि उसे अपनाने से ही हमारा जीवन सुंदर और खुशहाल बन सकता है। और योग को करने के लिए आपको किसी जिम में नहीं जाना है, कोई फीस पे नहीं करनी होती है, आपको जस्ट इसे अपना एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ बनाना है, एक पार्ट ऑफ योर लाइफ अपनी हैबिट बनाना है। सिर्फ कहना नहीं है, सुन के छोड़ नहीं देना है, ठीक है? तो हम सब जो है एक प्रण, एक जो है प्रॉमिस करते हैं अपने आप से कि हम योग को जीवन में अपनाएंगे भी और दूसरों को भी कहेंगे योग अपनाने के लिए। Thank you so much. God bless you all. God bless us all. Thank you, Principal Ma'am. Thank you, lovely ma'am. Thank you all my colleagues who have joined. Thank you all my NCC cadets, my students who have been patiently listening. Sir, are you there? Dr. Fayaz Ahmed, sir? No, वहाँ वैसे Thank you so much. Thank you. Have you got your feedback link? Yes. Feedback link ले लो सभी लोग chat box से, उसे fill भी कर दो and you will get your beautiful